Okay. Good morning, everyone. Thank you for joining on a Sunday morning. I think this is one of the most awaited sessions on the last day of 2023, and it couldn't get better with someone as interesting as Dada, where we can talk about our favorite topic, right? As we talk about running, etc. So uh, most of us, I'm pretty sure most of us who's on the session and also on Insta Live, नो दादा, आप दादा को जानते हो, उनके साथ दौड़े होंगे, उनके साथ बात किया होगा. एंड मेरे लिए आई थिंक इट्स बीन 7+ years knowing him as a person and as a runner and as a mentor and as a close friend. So हम लोग रन रोड पे भी मिले हैं एंड फिर ऑफलाइन भी काफी इंटरेक्शन होते रहता है. बट ही इज बीन अ आइडल एंड mentor and a friend for me. But there are a lot of takeaways for me when I look up to him. Just a quick introduction for Dada, and Dada, welcome aboard. Just a quick introduction. He's been running for I don't know around 10-12 years now, 14 years, and उनका पहला run, or I think one of the major events that he recalls is the Ahmedabad Sabarmati marathon. And recently उनका एक फोटो भी आया था या सर्कुलेट हुआ था जिसमें you would not be able to recognize him. The shape and size and the look and feel, right? But thereon, I think he is one of those runners who is focused on how to grow as a runner, a lot of self-discipline and a lot of self-training there. And उसके बाद उन्होंने he's run the Bangalore 100K, run the run 161 kilometers, Vadodara Ultra, which was one of the toughest one, and we still talk about the various stories around it. After doing a lot of events, काफी सारे events किए, उन्होंने फिर he was also started some self-directed runs, more on self-satisfaction kind of thing, right? Or I've been lucky to be part of some of those where उन्होंने Ahmedabad से Mount Abu 222 kilometers दौड़े थे. Then he ran from Ahmedabad to Porbandar. And these are all major ultra runs, right? I mean, self started and then running or self-supported, basically. He's also run the Maukirat Ultra in Meghalaya. I hope I am pronouncing it right. and also Porbandar run which was again another 400 kilometers. So all in all, amazing lot of distance covered and kafi. I mean, if there's someone who's qualified to talk on this topic, it can't be anyone better than Dada himself, right? And recently, as recent as first week of December, उन्होंने SRT Ultra, SRTL Ultra, that is 100 kilometers भी उन्होंने अभी complete किया है, and he is in the top 10 in that finishers list also. So, what better of time to talk about ADR Ultra now that we are organizing this. It is ADR's own flagship event, which happens every year, and we are in the 5th edition to this. And Dada is the brand ambassador. So Dada, once again, welcome for this discussion, and really amazing to have you here. Thank you so much. I mean, the introduction was it was as long as your runs, right? But it was, yeah, it's something which I really love. Yeah. No, so what we'll do in this session is हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we'll talk about ultra, basics of ultra, क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने register करा है, या काफी लोग हैं who are discussing or deciding whether I should click on that register button or not, right? And secondly, what to expect. कैसे हम अगर अब से लेके जैसे मार्च में है तो how much time is left, हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, what are our options in there, and how to go about running an ultra, what is an ultra, right? So Dada, let's kick it off, right? I mean, my first and foremost question that I think anyone who's new to running, will start from there, is what is an ultra? No, why would I run what is an ultra? If you can just start with that, and then we can deep dive into that.
Okay. Thanks, Harish, again for the introduction. And I think this is the most important. I mean, first thing, logo ko ultra should be. I mean, you should be aware. I mean, so we this session is basically to give you an idea what all why this ADR ultra, what is the thought behind it, and then what exactly is ultra and all the stuff. So and then why you should do it. That's where we are trying to today. That is the basically what we'll be trying to cover. So ultra, as is asking, like ultra is like anything, any distance which is beyond full marathon, which is 42.195. मतलब जो full marathon distance होते हैं उससे ज्यादा जो भी distance उसको ultra बोला जाता है. मतलब that is how it is defined. But so it is limitless. It can go up to anything like number of days, number of hours, kilometers. I mean, it's beyond limit. So that's how ये है. And then मतलब ये that's one part of it. And then it is like one of the most preferred running event now across the world, because India we are also catching up a lot. मैंने देखा जब पहली बार जैसे हरीश was saying बैंगलोर अल्ट्रा किया था 100 किलोमीटर्स. सो दैट वाज ऑलमोस्ट 8-9 years बैक. तो उस समय जितना पॉपुलैरिटी है आज के दिन में पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया इंडिया में. एंड देन लॉट ऑफ इवेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज हैपनिंग. तो हम लोगों ने भी जब शुरू किया था ये अल्ट्रा अहमदाबाद अल्ट्रा, इट वाज टू गिव अ चांस टू रनर्स इन गुजरात स्पेशली कि एक अल्ट्रा इवेंट हो जहां से एटलीस्ट यू स्टार्ट ग्रेजुएटिंग. सो अल्ट्रा इज दैट any distance beyond 42 kilometer 42.195 वो होते हैं. So that is how it is actually called an ultra. So if I run 43 or if I run 44 Yeah. or anything beyond Yes. it can be termed as It can an be termed. So there is no as such term, because now sometimes, so in our case also we have three categories. There also we have, yes. although we are We'll- saying it ultra. We'll come to that. Yeah. Yeah. Now, what are some of the famous, just very quickly, some important or famous runs in India and abroad? Very quickly. Yeah, okay. So there are nowadays, जैसे मैंने बोला कि there are a lot of ultras which are happening, and basically ultras there are two types of ultra. One is like it can be a road race or it can be a trail. I mean trail मतलब जंगल और सब कुछ मिला के, and road. So road, there are 2-3 major events which happens. अभी recently एक हुआ था, that is border run, which is in Jaisalmer. So which is you go up to almost Pakistan border. So it's a fantastic road. I wanted to run that, but अभी तक opportunity नहीं मिला. I registered once, but I could not go. They have not got the opportunity to get it. So that's a road event. Other events are across. There's a hell race. They are conducting a lot of races across the country. I mean, most hills and Himachal से लेके नीचे भी जाते हैं वो लोग. And then there is the one Harish was saying, हम लोगों ने जो last time attend किया था, the Western Ghat. So there are a lot of ultra happening in the mountain ranges of this Sahyadri mountain range. उसमें जैसे हम लोगों ने जो अटेंड किया था, that is done by Western Ghats Running Foundation. Yeah. तो उनके भी events होते हैं. So there are if you go to Uti, if you go to every places, lot of ultra events happen. So in Gujarat also, like Ahmedabad, we have one ultra. Another ultra which is happening regularly and which is done by Suti runners, which is Summit. Yeah. They call it Summit. Saputara Summit. Yeah. So Saputara Summit is now they are shifting from Saputara to some other new place, which will be much more exciting. It looks like. Right. So these are the races which are happening. And internationally, I think Bad Waters. Yeah, Bad Waters is there. It's a fantastic event. Hard Rock. There are a few. So a lot of then there is one in Mexico. Yeah. So and then U2MB. So actually there is a U2MB करके हैं, and then International Trail Running Association है ITRA. Yeah. So all these events, like the events which we have done, the one which we did, it is actually registered there. तो वो events जैसे हैं, तो आज के दिन में if you look out, you go and search for Harish, you will find Harish and what all race he has done. Great. तो कब किया था. So what's the major difference? I think marathon तक सबको more or less everyone is clear. There is a 10 kilometer, there is a 21 kilometer, which is a half marathon, and 42 kilometers, 42.195, which is a
full marathon. But what is the major difference between a ultra and a marathon? Like apart from the kilometers, up mindset bolo ya approach bolo, what's the major difference? So I feel the major difference is your mindset. I mean, जो ultra है, that is basically mind. Because आप जिसने भी full marathon किया होगा या half marathon किया होगा, so it is basically you will see like you need to have a very strong mind. It is not only if you are a very good runner, you are very you have a very good I mean physically you are very good and all, but if you are mentally not strong, तो यू माइट एक्चुअली फॉल्टर कि हो सकता है मैं जो मेरा कैपेबिलिटी है मेरा कैपेसिटी है उसके हिसाब से आई विल नॉट बी गेटिंग अ रिजल्ट और इट विल बी लाइक आई विल नॉट बी able to finish. So it is basically the mind which plays the most important role. Now if you look at the difference, जैसे ये बहुत important चीज है, लोगों को ये फर्क पता चलेगा, मतलब लाइक मैं अगर 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ आज के दिन में, तो आई विल बी रनिंग एट ए फास्टर पेस. इसी तरह मैं अगर हाफ मैराथन दौड़ूंगा तो और थोड़ा फास्ट होगा. राइट. इसी तरह फुल मैराथन होगा और थोड़ा फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो होगा. थोड़ा स्लो. सो इट विल बी स्लो साइड, यू विल बी एक्चुअली स्लोइंग डाउन एज यू गो अप. तो अभी फुल मैराथन, सो अल्ट्रा इज द स्लोएस्ट पार्ट. So, I mean, where you actually can also walk. You might have to walk. You need to have a strategical walk also done. So, ultra is where you actually need to survive for a longer period of time. So, you need to give your body to recover also. And then you again come back to running. So, it's a combination. So, you have to slow down because you have to last for a longer period of time. You need to have that much of, that is the basically the most important difference. And so that's what I would like to say. So 42 and 21 में ideally it's a timed one. Yes. आप एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जा रहे हो, आपको हाइड्रेशन करना है और दौड़ना है, ब्रीदिंग है, एक्सेट्रा, राइट. बट जब आप अल्ट्रा करते हो, all this is there, but I think in recovery and food, Yes. I think During the because run. आपके पास टाइम ज्यादा है, तो you have to keep on maintaining that Yes. level of energy and also ensure that you're not getting injured or you're not fatiguing. वो ज्यादा भी, वो भी एक एंगल है. Very true. Very true. ओके. बट आपने इतने सारे अल्ट्रा किया था एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा होगा या आपको भी ऐसा काफी बार हुआ होगा कि अच्छा पिछली बार ये हुआ तो अगली बार मैं ये करूंगा. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू वुड हैव फेस्ड, एंड एक एक करके बात करते हैं, मतलब challenges बोलो या what are the biggest learnings, one by one. So the biggest challenge which I feel and which everybody should understand is कि ये when you are going ये जो सबसे important चीज है, आप अगर full half marathon का तैयारी कर रहे हो तो that requires a different kind of a training strategy. Training is the most important thing. आपका training अगर जितना होगा 3 to 6 months is a very good base building, मतलब बहुत अच्छा रहता है training. एंड उसमें भी आप कौन सा कर रहे हो, अगर अल्ट्रा कर रहे हो तो आपका अल्ट्रा का ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होगा. आप अगर फुल मैराथन कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होगा. हाफ मैराथन कर रहे हो तो ऑल ये अलग सेगमेंट्स है. 10 किलोमीटर्स कर रहे हो, 5 किलोमीटर्स कर रहे हो, अलग हो जाता है. एंड देन सो एवरी इट इज अ डिफरेंट सेगमेंट. अल्ट्रा इज आल्सो अ डिफरेंट सेगमेंट जिसका ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होता है. तो इसमें ज्यादातर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो मैंने जो सीखा है और मैं बाकी लोगों को भी बताता हूँ. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सिमुलेशन. बिकॉज अभी अगर आप अल्ट्रा करना चाहते हैं कि अगर मेरे को 50 किलोमीटर करना है तो मैं ट्रेनिंग में 50 किलोमीटर नहीं कर सकता. इसी तरह लाइक फुल मैराथन में भी बहुत लोग गलती करते हैं कि दे गो एंड डू फुल मैराथन ट्रेनिंग में कर लेते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल, विच इज नॉट गुड ऑल्सो, कि उससे कुछ अपने को फायदा नहीं है. फायदा अगर सही में हमको लेना है तो हमको उसको सिमुलेशन करना पड़ता. तो सिमुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आप उसको जैसे मैं कैसे करता हूँ कि जैसे मेरे को जब मैं 160 किलोमीटर का तैयारी करता हूँ या 100 किलोमीटर, तो मैं उसी हिसाब से मेरा सिमुलेशन होता है कि हो सकता है 2 दिन का सिमुलेशन हो या 3 दिन में. सिमुलेशन इज लाइक आप 100 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसका रन का तैयारी कर रहा था तो मैं 100 किलोमीटर 3 दिन में करता था. सो बिटवीन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. आप रोज 100 किलोमीटर करते हो कि 100 किलोमीटर को 3 दिन में करता था और वो बैक टू बैक. तो जैसे
40 30 30 40 ऐसा करता था, तो विच इज 100 किलोमीटर। ओके तो इस तरह तो बॉडी को सिमुलेशन करवाना, बिकॉज योर मसल हैज इट्स ओन मेमोरी। आपका मसल्स का अलग मेमोरी होता है। आप जितना उसको मतलब करोगे, मतलब जितना आप उस तरह ट्रेनिंग करोगे, तो मसल विल आल्सो हैव दैट मेमोरी एंड इट विल गिव यू दैट endurance ki to last for a long period of time. And the So most one is- important thing, that is the most Right. important thing. Second, the most important thing, which is anyway applicable for any distances, is your यहाँ पे हम बोलते हैं आज के दिन में बहुत सारे 80-20 रेशियोज का हम बात करते हैं। Right. 80% is aerobic run, 20% anaerobic. Yeah. So that is a formula which is being now found out कि बहुत ही राइट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला है। मोस्ट ऑफ द कोचेस अक्रॉस द वर्ल्ड वो सजेस्ट करते हैं, वेयर 80% ऑफ योर रन इज लाइक एरोबिक, मतलब आप अपने जोन में, मतलब आप जो, मतलब अगर बेसिक लैंग्वेज में बताऊं कि कोई दौड़ रहा है तो बात करके एक पूरे सेंटेंस बोल सकता है, इस तरह का हो, मतलब एक है। तो दैट इज सब कुछ स्पीड में नहीं करना है, आराम से दौड़ोगे तो भी इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। वेरी फर्स्ट ऑफ सो एंड इसमें क्या हो जाता है, अल्ट्रा में और भी ज्यादा हो जाता है। लाइक मैं जब करता हूँ अल्ट्रा का ट्रेनिंग, या हम लोग हमारी टीम हम लोग जब करते हैं, तो हमारे 99% ट्रेनिंग जो होता है ना, वो एरोबिक होता है। 1% खाली हम एनारोबिक करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी हो, थोड़ा सा, नहीं तो बोरिंग भी हो जाता है कभी। एंड देन रेस से पहले हम करते हैं। So that's how, these are the basically two important things which is very important. Training should be, it's not that कि मैं आज कल जाके अल्ट्रा कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर करना है तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल है, अगर कर भी लिया तो विल नॉट बी एंजॉयिंग इट। तो एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। सो हमने एक ट्रेनिंग के बारे में बात किया, एंड यू नो व्हिच इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज ट्रेनिंग में यू नीड, आई थिंक आप दो चीज बोल रहे हो। एक है you have to plan your training so that you know you can include a lot of aerobic zone, and secondly patience चाहिए होगा, because you know you are not thinking of speed. आप you are planning it. So one is training. What is this, is there any other challenge or is there any other point of view, like you know mindset हो गया? Mindset, yes. So मैं समझता हूँ, because there are two, because आपका जो तैयारी है, it is not only your physical training, but your mental training is also required, which is most of the time we try to avoid it. मैं mental training भी करता हूँ। mental in the sense like you have to think about it, like एकदम सिंपल सा चीज है कि आपको विजुअलाइज करना है पहले से कि मैं हाँ फिनिश करूंगा, मेरे को ऑलरेडी, तो इस तरह का दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ मतलब मुझे करना है। सो लाइक, सो मेंटल तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी हम मेंटल तैयारी की बात करते हो तो इज इट मोर लाइक मतलब मेडिटेशन करना है या कुछ और टेक्निक? आप क्या करते हो? मतलब मुझे पता है आप दो चीज करते हो। एक है आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हो, सो एंड दैट्स योर मेथड, दैट्स योर वे, एवरीवन इज हाउ टू, हर किसी को अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। बट आपके जो दो अप्रोचेस है, वन इज आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हो सो दैट इट बिकम्स अ social, you know, it becomes a thing that you already everyone is expecting. The second thing is and which I would like to know more about is that आप एक cause के साथ जुड़ जाते हो। So can you talk a bit more on that? आप एक why do you do this? Yeah, so एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने एक सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा फायदा है, जैसे हरीश ने बताया था, लाइक यू नीड टू अनाउंस इट। आप अगर जिस दिन आप बता दोगे ना कि 10 आदमी, मे बी इट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी, बट मेरे लिए जो वो वर्क करता है कि मैं, जैसे मैं पहली बार 220 किलोमीटर किया था, तो मैंने ऐसे ही माउंट आबू जा रहा था, तो मैंने फेसबुक में डाल दिया था कि ये रोड 222 किलोमीटर मैं करने वाला। सो दैट्स व्हेन आई बिकेम अकाउंटेबल टू माई सेल्फ। मेरा अकाउंटेबिलिटी उससे काफी आ गया। एंड देन मेरा ट्रेनिंग में, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज, मतलब आपका जो मेंटल वो है, इट इज ऑल्सो लाइक, इट इज नॉट पॉसिबल कि जैसे आपको डेली दौड़ना है, वो जो मोटिवेशन चाहिए वो उसके पीछे इस तरह का एक अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाता है खुद के साथ। एंड दूसरा जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका इमोशनल कनेक्ट। तो मैं वो इमोशनल कनेक्ट मानता हूँ कि इट कैन बी ए सोशल कॉज, इट कैन बी यू वांट टू किसी को मतलब यू वांट टू शो टू समबडी कि नहीं, किसी को आप दिखाना चाहते हो। जैसे मैंने अभी रिसेंटली भी एक, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मतलब
किसी को मैंने अभी फुल मैराथन का ट्रेनिंग दे रहा था इसमें अदानी मैराथन में, तो उसको मैंने बोला था कि इमोशनल कनेक्ट, उसके घर पे एक चैलेंज था, तो मैंने बोला था आप वो चैलेंज को एज अ यू कैन विजुअलाइज करो एंड देन लास्ट 10-15 किलोमीटर्स में आप उसको विजुअलाइज करो एंड इट विल गिव यू दैट इमोशनल कनेक्ट एंड देन आपको वो जो चाहिए, मतलब मेंटल वो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, वो उसमें से आ जाएगा। बट उसने ड्यूरिंग द रेस जब मैंने नेक्स्ट डे उसको पूछा तो उसने ये बताया मुझे कि वो तो ठीक था, वो तो मेरा जो आपने इमोशनल कनेक्ट बोला वो तो मेरा लाइफ लॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है, बट मुझे दौड़ते समय एक बंदे का याद आया जिसने मेरे को हर समय बोलता था कि तुम तो यार ट्रेनिंग में बहुत अच्छे दौड़ते हो, रेस में कभी अच्छे नहीं दौड़ते। तो वो एकदम सा उसको एक मेंटल वो आया कि नहीं मुझे आज करना है। सो एक हम जैसे एक हरीश, हम लोग को पता है एक बहुत ही अच्छा बुक है जो इसके बारे में बोलता है, तो हाउ बैड यू वांट इट। सो बहुत सारे बुक्स भी मिलते हैं जो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इफ यू रीड ऑन द सक्सेसेस, तो वो एक है। बट इमोशनल कनेक्ट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। जैसे ये है निगेटिव है, किसी को आपको दिखाना है तो कर सकते हो, या आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, जो हम लोगों ने बहुत लोग करते ही हैं, मैं बताता भी हूँ, कुछ लोगों ने किया भी है कि सरप्राइज देना है किसी को। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली ब्रिंग दैट, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका ट्रेनिंग का जब अकाउंटेबिलिटी है आप वो सब करना शुरू कर दो। ओके ओके। अभी एंड देन जस्ट टू ऐड हियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लोग इसका मेंटल स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, एक और चीज बहुत आते हैं, जैसे आप जब पहली बार जो अल्ट्रा करोगे आप लोग या कोई भी 50, जैसे आप बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि मेरे को 4 घंटा करना चाहिए, 6 घंटा, सो विल कम टू दैट। बट जो ये जो 4 घंटे से ऊपर 6 घंटे में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक और चीज आ जाता है, 4 घंटे में भी आ सकता है नया रनर है तो, बट अगर आप एक लेवल है कि आप 21 किलोमीटर कर रहे हो देन 4 घंटे कोई इशू नहीं, पर 6 घंटे आप करोगे तो देर विल बी वेव, ऐसा सिचुएशंस आते हैं मेंटल, जैसे हरीश ने भी फेस किया होगा कि ये क्या होता है कि आपको हर शुरू में अच्छा लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा एकदम, देन देर विल बी स्पेस कि आपको लगेगा यार अभी और नहीं होगा मेरे से, मेरे को रुकना है, मेरे को खत्म हो रहा है। सो वो फेज आएंगे, सबको आते हैं, मेरे को भी आया, हर बार आता है, बट वो फेज में से आपको निकलना, तो ये इमोशनल कनेक्ट या आपने जो भी आपका वो रखा है या मेंटल वो, तो वो आपको वापस लेके आएगा एंड देन वो आता ही है, आपको खाली जस्ट होल्ड ऑन करना, दैट्स हाउ इट इज। Okay, that's interesting, and I think thank you for sharing. I think हमने more or less एक अल्ट्रा का बेसिक कवर कर लिया है. Of course, there are lot of other facets like gears, हम you know कैसे दौड़े, terrain क्या है, हम रोड पे दौड़ते हैं versus माउंटेन पे दौड़ते हैं, क्या फर्क है, shoes क्या है. It can go on, right? But in this session, we wanted to cover the basics. के अल्ट्रा क्या है, what is it, and what are the basic points or mindset क्या होना चाहिए, training approach क्या होना चाहिए. Let's quickly move to the ADR Ultra. You basically said कि ADR Ultra हमने initiate किया था for someone who in a near Ahmedabad या in Ahmedabad जिनको या गुजरात जो, और I think we are also seeing participants from Mumbai and which is a good thing, right? Yeah. So the idea is it's a event for runners created by runners, which is Ahmedabad distance runners, and हम जहाँ तक मुझे याद है we basically ensure that everyone enjoys the event. It's a 100% positive review kind of an event. तो हम लोग थोड़ी देर उस पर बात करते हैं कि कैन यू जस्ट टॉक अबाउट द ADR अल्ट्रा फॉर्मेट, कहाँ पे है एंड क्या तरह का व्हाट काइंड ऑफ ट्रेल इट इज, कैसा है, एंड आल्सो द distances etc. Very quickly. So quickly आप लोगों ने जिसने भी देखा भी होगा, ये हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुके हैं. देयर अगेन यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि मैंने शुरू में बताया था ट्रेल अल्ट्रा अलग अलग होता है. सो दिस इज ए रोड, कंप्लीटली रोड सरफेस, एंड अल्ट्रा में एक दो और सेगमेंट्स होते हैं कि सेल्फ सपोर्ट एंड सपोर्ट. तो ये वाला सेल्फ सपोर्ट नहीं है, मतलब सेल्फ सपोर्ट में क्या होता है कि आपको खुद को सपोर्ट करके भी होते हैं अल्ट्रा अक्रॉस द वर्ल्ड. सो ये जो इवेंट है इसमें आपको देयर विल बी ए सपोर्ट. So basically first thing it's road and then we have divided into 3 segments, 4 घंटा, 6 hours and
12 आवर्स। तो अभी इंटरेस्टिंग ये फॉर्मेट के पीछे जैसे हरीश पूछ रहा था, तो हम लोगों ने ये इस तरह का फॉर्मेट रखा है कि किसी को अगर पहली बार एक अल्ट्रा का वो लेना है, मतलब हाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एन अल्ट्रा, दिस इज अ फैंटास्टिक इवेंट टू स्टार्ट विद। जैसे मुझे, मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे जब पहली बार अल्ट्रा करना था तब कोई इवेंट्स नहीं थे, आई हैड टू गो टू बैंगलोर एंड डू दैट। तो तब जाके पता चला कितना जबरदस्त अल्ट्रा इज डिफरेंट, मतलब आपको जब तक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो चार, सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मेट व्हिच इज देयर, लाइक आप इट्स लाइक आप ग्रेजुएशन करते हो ना, तो इस तरह का होता है कि एक लेवल क्रॉस करते हो तो दूसरे लेवल थर्ड, सो लाइक हाफ मैराथन, पहले 10 किलोमीटर किया, हाफ मैराथन, फुल मैराथन एंड देन अल्ट्रा। सो अल्ट्रा इज दैट लेवल। सो आपको ये अल्ट्रा का जो वो करना है, सो दैट्स व्हाई इवन 4 आवर्स इज ऑल्सो डिजाइन दैट वे कि आपको 4 घंटे में अभी मैं डिस्टेंसेस बता देता हूँ। 4 घंटे में आपको 24 किलोमीटर करना है, एंड ये 6 किलोमीटर का लूप है। ओके, राइट, सो ये 6 किलोमीटर का लूप है, आपको 4 घंटे में करना है, सो विच इज लाइक 10 मिनट्स पर किलोमीटर। तो आप अगर बहुत अच्छे वॉक भी कर सकते हो। हमने देखा है कि 7-8 मिनट वाले वॉकर्स भी होते हैं, तो अगर 10 मिनट का आपका वॉकिंग पेस है तभी भी आप ये कर सकते हो। तो हमने बहुत ही इजी फॉर्मेट रखा है। वॉक करते वक्त अगर 10 मिनट में या 10 मिनट में 1 किलोमीटर खत्म कर सकते हो तो इवन वॉकिंग इज अ गुड ऑप्शन। यस, यू कैन फिनिश इट। आई मीन आपको इतना इजी फॉर्मेट रखा है कि आपको जो टारगेट किलोमीटर्स है 24 किलोमीटर आप कर सकते हो। इसी तरह 6 घंटे में हमने रखा है 36, विच इज अगेन 10 मिनट्स पर किलोमीटर है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड देन उसका हो जाएगा अपना 6 लूप्स हो जाएंगे। ओके, सो 6, राइट, 6 आवर्स में इट विल बी, यस, तो रफली 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। एंड देन जो 12 आवर्स है उसमें 60 किलोमीटर, मतलब आपको 10 लूप करना है। अभी जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ना अल्ट्रा का, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो अल्ट्रा का एक और इम्पॉर्टेंट मेंटल का जो होता है कि आपको डिस्टेंस दूर का नहीं सोचना है, आपको उसको सेगमेंट करना पड़ता है कि आपको उसको छोटे छोटे डिस्टेंस पे लेके आओ। तो मैं सबको ये इस इवेंट में हम सब बार हर बार मैं ये बताता हूँ कि आपको 4 घंटा करना है तो आप 4 घंटा करना है नहीं सोचना है, आपको कितने 4 लूप करना है, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने एक लूप खत्म किया 6 किलोमीटर का, तो आपको पता है कि मेरे को 3 लूप और करना है, 2 लूप, फिर 2 लूप किया तो 2 लूप। तो आपको इसमें मेंटली आपका अगर आप लूप इजी के हो हिसाब से सोचोगे, 8 स्टेशन टू 8 स्टेशन सोचोगे तो फिर यू नो इट विल बी फास्टर, और एटलीस्ट मेंटली यू आर ट्रेनिंग इट बेटर। सो स्पेशली 6 घंटे और 10-12 घंटे वाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 घंटे का जो एक और क्वेश्चन आते हैं लोगों को कि मैं रात को नहीं सोऊंगा, इतना दौड़ूंगा कैसे। तो ये आप जब रोड में उतरते हो ना, आपने अगर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या अगर कुछ भी किया होगा तो आपको पता है कि ये टाइम ऐसे निकल जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है। सो इट इज लाइक दैट, सो इट इज अ वेरी इजी फॉर्मेट। इट इज डिजाइन कि आप लोग इसको पार्टिसिपेट करके एंड देन आप इसको अच्छी तरह से भी मतलब अच्छे रनर्स भी आते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि जैसे 12 घंटे में 100 किलोमीटर करने वाले लोग भी आते हैं इसमें, बिकॉज या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं इसमें। तो बिकॉज इट्स अ फ्लैट ट्रैक एंड फुल्ली सपोर्ट रहेगा, एंड सपोर्ट में तो आप मतलब सोच नहीं सकते हो इस तरह का, बिकॉज रनर्स है एडीआर। अच्छा है, मतलब फूड वाइज एंड यू नो स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, एनर्जी ड्रिंक से लेके आपको हर, तो आपको कोई फ्यूलिंग का कोई टेंशन नहीं है, आपको खाली दौड़ना है बस। बाकी आपको इवेंट में, and we also have sensors, we'll be having sensors, timing chips, तो आपका पूरा रिकॉर्ड होगा। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं, लास्ट टाइम का एक जो वो टेक्निकल, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट जब बात करेंगे अलग से आपको इसके बारे में, तो दे विल गिव ब्रीफ यू कि हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट, further improvement on it. So these are the 3 basically distance. So distance doesn't look very challenging, at least for the 4 and 6 ones. सिर्फ आप अगर लूप साइड से देखो तो, yes, बट टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये शाम को होगा, इट्स अ नाइट अल्ट्रा, it's a night ultra. दैट्स द डिफरेंस। That's the difference. तो आप दिन में ऑफिस जाके वापस आके दौड़ सकते हो। बट जैसे हमने वो है, मतलब ट्रेनिंग, थोड़ा सा ट्रेनिंग में वो सब थोड़ा ध्यान रखना अच्छा है। एंड आज के दिन में आई थिंक इट इज जो शांतिग्राम में ही हो रहा है, सो वी अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू हैपन इन शांतिग्राम। दैट्स इट। तो दैट्स अ 6 किलोमीटर का फ्लैट ट्रैक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, वन मोर, एक और एंगल है बिफोर वी गो इनटू द नेक्स्ट, यू नो जस्ट अ रिमाइंडर टू द ऑडियंस, इन केस आपके पास कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ऐड करते जाइए।
we'll use the last 15 minutes to go into questions, and people who are on Zoom, we'll see if we can also unmute and address these questions. So एक और aspect है for this date, because when is this, Dada? When is ADR? This is happening March 4th को. So हमारे पास आज के दिन में if you look at it, तो ट्रेनिंग के हिसाब से अगर देखें आपके पास 8 weeks, roughly 8 weeks जितना टाइम है, which is sufficient. Right. I mean, if you have already been running, मतलब you are not injured and then एकदम से शुरू करें, that is different. But even if you are starting, you can actually go for 4 hours. So यहाँ पे हाँ ये important है. So ideally, this is one of the last events in a running calendar. Also. One of them. I mean, थोड़ा सा गर्मी रहेगा हल्का, मतलब but since रात को रहेगा, तो it will be not that bad कि 6 hours और 8 hours वाले को, 12 hours वाले को they will have a good, I mean, temperature अच्छा drop हो जाता है. अब एक रनर के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि who should attempt, मतलब कौन क्या डिस्टेंस ले सकता है आपके हिसाब से, यानी इट्स अ जनरल गाइडलाइन, राइट? मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट कौन, एंड आई थिंक मेडिकल चेकअप्स वो सब भी है. सो आपके हिसाब से who should be attempting what distances? So it's a very good question, because ये क्या होता है आज के दिन में जो ट्रेंड है ना, maybe one of the reason that's where I feel social media is also responsible. कि हमको सोशल मीडिया में जाके दिखाना है kind of, मैंने कर दिया 12 घंटा. So running is something which is lifelong. मतलब मैं हर बार सबको ये बोलता हूँ, मैंने मेरे लाइफ में झटका आया हुआ है, but even then I am continuing running. So running is a lifelong event. It is not to be considered as कि मेरा एक event है अभी इसमें कर लूँ, अरे next event है उसमें कर लूँ, तो that is a wrong, मतलब वो perception आज के दिन में, जिसके वजह से बहुत सारे injuries भी हो रहे हैं आज के दिन. So basically the main reasons are that. So you need to be very मतलब structured वैसे करो कि जैसे आप, मैंने अभी 21 से नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो आप 4 घंटे कर सकते हो. मैंने लास्ट ईयर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. हमने दो हमारे एक डॉक्टर उत्विज है, उनके फ्रेंड्स है, उन दो फ्रेंड्स थे, उन लोग दे आर वेरी गुड, मतलब रेगुलर वो लोग वॉक करते हैं एंड वेरी कंसिस्टेंट. तो उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर 6 घंटे कर दिया, बट बिकॉज दे आर इनटू वेरी रेगुलर काइंड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, मतलब अच्छे डिस्टेंस करते थे, बट उन्होंने फिर ट्रेनिंग के साथ ही किया था. बट मेरा था कि आप 4 घंटे कर रहे हो, तो मे बी आपने आज के दिन में मान लेते कि 10 किलोमीटर किया होगा या 21 किया होगा, या आप इंजरी से वापस आ रहे हो, तो यू कैन टेक दैट एज अ, एंड देन कभी अल्ट्रा नहीं किया तो जस्ट नाइट को कभी दौड़ा नहीं, इस तरह का कुछ है तो you can always attempt. So anybody, 4 hours can be done by anyone who is in regular practice. And then from amateur, like who's starting, या फिर anyone who is into 10 12 kilometers 15 kilometers करते हैं, तो 4 hours easily हो सकता है. Because जैसे हमने शुरू में बताया 10 मिनट पर किलोमीटर, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो which is आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो नॉर्मली अगर धीरे से भी मैं वॉक करूंगा तो भी 11-12 मिनट लगता है, तो आई हैव टू बी लिटिल फास्टर, तो खाली वॉक करके भी हो जाता है. दैट इज हाउ, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू डू. एवरीबॉडी कैन अटेम्प्ट दैट. हु शुड अटेम्प्ट a 6 hours? 6 hours I would suggest, like अगर आपने the ideal people should be जिसने फुल मैराथन किया है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है. बट ठीक है, अगर फुल मैराथन नहीं किया फिर भी हाफ मैराथन का काफी कंसिस्टेंटली करते हैं, देन हाफ मैराथन के आसपास डिस्टेंस करते हैं, तो दे शुड अटेम्प्ट. बिकॉज हाफ मैराथन का जो टाइमिंग होता है 2-2.5 घंटा 3 घंटा, सीधा आपको 6 घंटा विल बी, आई मीन इट्स 100% इंक्रीमेंट है, तो विच इज थोड़ा सा नॉन एडवाइजेबल. तो बट फिर भी आप मतलब करते हैं लोग, but it has to be very slow, because here also you can actually pace up, walk और run का combination आप करके भी कर सकते हैं. So ideally you should sacrifice the pace. Pace पे focus ना करके, speed पे focus ना करके, आप time on road या वो break down करके उतना time sustain करके rest कर लो थोड़ा सा, बहुत time मिलेगा, and then थोड़ा run walk करो. I mean हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे अच्छा चीज है जो हम लोग ट्रेनिंग में भी, हम जब हम बाद में बात करेंगे, तो it can be like आप उसको स्ट्रक्चर कर दो कि 20 मिनट दौड़ना 5 मिनट वॉक, या 15 मिनट दौड़ना 5 मिनट वॉक, या 10 मिनट वॉक. सो दैट वे आल्सो यू कैन डू, मतलब वो रन भी, मतलब इट कैन बी रन वॉक कॉम्बिनेशन, सो योर बॉडी गेट्स रिकवर्ड आल्सो. 12 hours की बात करें तो हु शुड बी
you know, Yeah. at least So सोचना at किसी least को है. I think 12 hours उनको ही करना चाहिए जो एटलीस्ट 30 किलोमीटर्स के रेगुलर करते हैं, जिनको फुल मैराथन का इतना इंटरेस्ट नहीं है, करते नहीं है. व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज फुल मैराथन वाले तो कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर ही सकते हैं. एंड बट एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लास्ट 2 वीक पहले फुल मैराथन किया है, आप इस इवेंट में 12 घंटे कर रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज इंजरी का चांसेस रहते हैं. बट अगेन डिपेंड्स ऑन दैट एथलीट कि आपका क्या ट्रेनिंग है, आप कैसे कर रहे हो. Right. बट फुल मैराथन वाले कर सकते हैं अटेम्प्ट. एंड आई वुड सजेस्ट, मतलब आप कर सकते हो, मतलब अगेन इफ यू जस्ट फॉरगेट कि नहीं मेरे को 100 किलोमीटर करना है, ऐसा सोच के आप दौड़ रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. आप पहली बार कर रहे हो तो यू हैव टू जस्ट फील इट, लाइक पूरा ये पूरा फील है. मतलब आप रात को पूरे रात दौड़ रहे हो एंड देन आप खाली जस्ट विजुअलाइज दिस, मैं जो बताने वाला हूँ अभी. आपने 8 बजे दौड़ना शुरू किया, बहुत गर्मी होगा एकदम, एंड देन यू फील लाइक 2 घंटे बाद ही, जैसे मैंने बोला, एक ऐसा वेव आएगा ना, आप बोलोगे क्यों दौड़ रहा हूँ, मेरे बाकी फैमिली वाले सब लोग सो रहे हैं, मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ. सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन विच विल कम. बट अगेन जैसे जैसे सुबह के टाइम जाएगा, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, देन यू विल सी लाइक बहुत एनर्जी आएगा. देन हमारे जब सपोर्ट टीम ऐसे होते हैं ना, वो लोग आपको पूरे रात चीयर करेंगे, कुछ लोग तो डांस करवाएंगे आपको. तो ऐसे सब है तो आपको ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन रहेगा. एंड अर्ली मॉर्निंग जैसे 3-4 बजे के बाद आप देखोगे फिर से मेरा बॉडी में रिजुविनेट हो गया, बिकॉज दैट इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स. Right. एंड देन यू विल बी एबल टू फिनिश. सो डोंट हैव टू, मतलब कि नहीं मेरे को करना है 150 किलोमीटर करना है, बट जस्ट try to be there in 12 hours, because take this as a event to graduate into other ultras across the country, जो इससे भी बहुत सारे अलग अलग टफ अल्ट्रास होते हैं, जिसके कट ऑफ बहुत टफ होते हैं. तो जैसे हमने जो इवेंट थे उसमें काफी स्ट्रिक्ट कट ऑफ थे, तो ये जैसे इंटरनेशनल ट्रेल वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. Okay. तो इस तरह का इवेंट्स है तो वील हैव टू बी वेरी, अदरवाइज यू कैन अटेम्प्ट Right. सो इजीली. So I think you said it and you told us in the other event also. Okay, focus on being on the road, and secondly, एक step आगे रखने का कोशिश करो every time, right? Yes, That's yes. the don't stop is what the right. Okay. So अभी आपने बताया, just quickly moving to the last section before we open up for the chat, questions etc. ट्रेनिंग आपने बोला अराउंड रफली 8 वीक्स है. तो अब इसमें 8 वीक्स में क्या, अगर मैं 4 आवर्स कर रहा हूँ या 6 आवर्स कर रहा हूँ, 12 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी दैट वी एक्सप्लेन, कैन वी ट्रेन फॉर इट, इज इट इनफ टाइम, एंड होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच. आई विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप अबाउट, वो हम बाद में बात करते हैं कि कैसे हम फैसिलिटेट करेंगे, एडीआर कैसे फैसिलिटेट करेगा. बट आप अगर एक जनरिक अप्रोच आप सजेस्ट करें तो इट वुड बी गुड. See, first thing is 8 weeks है तो I would suggest पहला चीज कि आप ठीक है, और 2 वीक बाद शुरू करूंगा ऐसा नहीं कर सकते. तो मे बी फ्रॉम वेरी नेक्स्ट वीक, और यू नीड टू स्टार्ट. तो इनिशियली जैसे अगर जो 21 किलोमीटर, जो 24 किलोमीटर करने वाले हैं, या 4 घंटे वाले में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू बिल्ड अप. नेक्स्ट वीक से आपको शुरू करना पड़ेगा कि वीकली अराउंड 30 किलोमीटर्स से शुरू करें. 30, 35, 40 किलोमीटर्स. 30 किलोमीटर्स इज बेस, आप शुरू करो. 30 kilometers is हफ्ते में 3 दिन, हाँ, 10 हाँ, 10 किलोमीटर, हाँ, right? So something like that. So that's something also doable, yeah. doable. And then आपके पास 8 weeks है, and then slowly you will build it up, and then आप लास्ट 1-2 वीक पहले जाके उसको पीक में चढ़ा के, and then you recover and then do the event. So last So week में we have ideally recovery something. होना चाहिए. Yes. Last week में ideally recovery करें. Recovery. तो अभी से build up करते रहते हो 24, and same method can be applied for 6 and 12 also. But 12 में या 6 में आपको जैसे मैंने time on बोला, road सोचना चाहिए. so it has to be a structured way. आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ठीक है, हाँ कल दौड़ लूंगा, फिर परसों दौड़ लूंगा. एक और जो चीज मैंने 6 घंटे और 12 घंटे के लिए मैंने बताया, वो है सिमुलेशन. तो वो सिमुलेशन भी आपको जरूरी है. So back to back रन्स करना. Okay. So एवरीवन, मतलब हमने बता तो दिया, बट आई एम प्रीटी श्योर, जैसे मैं खुद का ट्रेनिंग प्लान ऐसा तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत नया है. मैं खुद के लिए कोचिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो हम एडीआर के तरफ से क्या हम ऐसा कुछ सपोर्ट करेंगे, या एज अ ग्रुप क्या हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें एनीवन हु जॉइंस इन लेट्स से 4 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स कैटेगरी, एक जेनरिक
approach or training plan there. Yes. Is that something that you are So yes, we do it every year. हम हर साल करते हैं. Last year because मेरा एक मेडिकल कंडीशन था, फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं था, बट हमने उसमें भी हमने एक रखा था कि 4 घंटे के लिए अलग से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें अलग से हम एडीआर, ये इवेंट है हम जब से हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट आई थिंक तब से हम प्लान शेयर कर ही रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड प्लान. Okay. आपको करना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, दैट इज फाइन, बट यू विल एटलीस्ट गेट सम आइडिया कि इसको करने से मतलब हो जाए. एंड देन सी इट इज प्रिपेयर्ड बाय अस, लाइक हम लोगों ने, कुछ लोगों ने काफी सारे अल्ट्रा किया है, तो उसके बेसिस पे हमने डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है. सो आई एम श्योर it is working, it is a workable design, and definitely if you follow that, अगर मैं इतना भी बोलूंगा 70 to 80%, it may not be possible to कि आप लोग 100% फॉलो करना, बट अगर 70-80% भी आप उस प्लान को फॉलो कर लोगे तो you can do it. So ADR will be actually creating 4 घंटा 6 hours and 12 hours के वो, and then we'll be sharing the plan. So based on रेस, और उसमें बहुत सारे जो डिफरेंट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चंस, मतलब उसी 4 hours का क्वेश्चन, 6 hours के क्वेश्चंस, वो सब भी हम उसमें एड्रेस कर पाएंगे. ओके ओके. सो ये इंफॉर्मेशन अभी आने वाले दिनों में सबको, आई मीन whoever is passing or whoever is joining this, उन सबको पास किया जाएगा सर. Okay. Yes. So let's quickly take some questions. I'm just going through the chat. Just give me a second. ऑडियंस क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, जो भी चैट में है. विल जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट इट. ओके, just going through. Shubh Traders, I don't know who that is, but the one of the questions is, can you guide about hydration during run and what distance should be in one shot is good without break? So Yeah, so yeah. it's a very good question. और जैसे मैंने अभी जस्ट जो हमने बात कर रहे थे कि हम लोग एक तो जब हम आपको प्लान देंगे, गाइड का वो करेंगे, तो विल आल्सो हेल्प यू ऑन द हाइड्रेशन पार्ट, कि हाइड्रेशन आपका ट्रेनिंग में किस तरह रहना चाहिए, एंड रेस डे में भी हम बता देंगे कि आपको किस तरह का हाइड्रेशन करना चाहिए. दैट वी विल एंश्योर. एंड सेकेंड पार्ट आपका जो था कि कितना डिस्टेंस बिना ब्रेक के दौड़ना है, विच इज अगेन डिपेंड्स ऑन आपको कितना, जैसे आपको मान लेते कि जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि मान लेते कि यू आर ऑलरेडी ए ट्रेन, मान लेते कि आपने ऑलरेडी हाफ मैराथन 21 किलोमीटर आज के दिन में 2 घंटे में आप कर रहे हैं, तो हमारे साथ हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप 4 घंटे में कितना टारगेट आप ले सकते हो, एंड देन उसके बेसिस पे आपका रनिंग प्लान होंगे, उसके बेसिस पे ब्रेक्स और ये सब जो आप बोल रहे हो ना. So that can be also, break can be, there are 2 types of break. One is आपको वीकली हर दिन नहीं दौड़ना है, उसका भी ब्रेक इम्पोर्टेंट होता है. And then during the run also, we will not break exactly, maybe walk. So that those things will be हम लोग हेल्प करेंगे, individually customized, no issue. ओके ओके. सो और हाइड्रेशन का कैसे, मतलब हर किलोमीटर में थोड़ा पानी पीना है, या लाइक 5 किलोमीटर में एक पानी पीना है, कैसे वो? इट्स लाइक मैं उसको, वी हैव शैली इन एडीआर, शी इज अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट, एंड मैं उसका एडवाइस, उसने एक बार मेरे को बताई थी, तो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि एवरी 2 किलोमीटर्स में एक सिप आपको पीना है, तो दैट इज योर, सो दैट एक्चुअली is what you need to target. So it's like बहुत ज्यादा आप नहीं भी पीना चाहिए, because normally hydration is something very important. आप ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते, आपको आपके बॉडी के हिसाब से पीना है. तो ज्यादा करने से जैसे बहुत लोगों को स्टिचेस आ जाते हैं यहाँ, तो वन ऑफ द मेन रीजन इज बिकॉज आप बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर रहे हैं. सो एक गोल्डन रूल जो मैंने पढ़ा है, यू कैन वैलिडेट, इज दैट एवरी किलोमीटर टेक अ सिप, राइट? सो दैट इज समथिंग. एंड अगेन आपका जैसा उस दिन रेस डे में क्या रहेगा कि जैसे रात के टाइम 8 बजे जब शुरू करोगे, तो आपका बहुत ही गर्मी रहेगा, आपका हाइड्रेशन विल बी डिफरेंट. देन अगेन आपको 12-1 बजे के बाद हाइड्रेशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा. आई मीन योर बॉडी, सो दोस थिंग्स
आपको खुद अभी ये जो 8 वीक है ना, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अगर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है, सो विल हेल्प यू इन दैट आल्सो। Okay. And I think once we have the hydration, sorry, the nutritionist also join us on the panel. ये जो groups है उसमें हम उनको भी involve होने को बोल सकते हैं, right? So that is also on the plan that we can talk about. Okay. I think Astaf has asked a very good question and very important question, very relevant, is that I'm participating in this ultra for first time for 4 hours. Maximum I run 12 kilometers at pace of 740. So आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं? I think आस्तव हमने वो पार्ट तो कर दिया कि ट्रेनिंग पार्ट we will give you a guideline. I think we already talked about it. But I think you have taken the right decision and you can. So I think this is a very good example. Like he's saying, 12 kilometers is what he has done. So he's definitely not qualified to do, I mean, 6 hours, but he's definitely qualified for doing 4 hours because. And then look at his pace. He's 7:40 is a very good pace. He's running about. So he's not. उनको already as I said 10 के pace पे हमको करना है. So he has to just slow down. एंड हम जब ये 8 वीक का ट्रेनिंग देंगे ना तो he'll be actually becoming, मतलब अगर हाफ मैराथन भी नहीं किया होगा तो इस इवेंट में हाफ मैराथन प्लस एटलीस्ट वो भी हो जाएगा. You will be asked up, you will be confident that you can very easily and train beyond. So yes. Good question and thank you. Just a quick point, two things actually. ये जो questions are, these are very good questions and we would like to address as many as possible. So अगर 12:30 से beyond थोड़ा बहुत जा रहा है तो whoever wants to join, stay on, please do stay on and we'll try to address those questions. And secondly, अपना ADR Ultra में Fast Enough is going to be the hydration partner. So we'll be also, from that point of view also hydration is covered. Anand, hey Anand, good to see your message. So what Anand is asking is, with 8 weeks time available, what should a person target for 4 hours or 6 hours ultra? No event is planned during this period. So if he's not planning any other event, what would you recommend is a ideal target that he can carry in his mind? So it's Anand, it's a very general question because what we need to also have little bit of data, like थोड़ा सा अगर मैं say like if you are asking about yourself, you can connect with us and then we'll guide you. Don't worry, हम एक एक individual को customized we can help. Frankly, हम बता देंगे कि हम what you should be, because we'll try to आपका past का क्या experience है, if you are carrying some injury, whatever. तो ये सब data के साथ, and if you are in Strava, it's very important that if you are in Strava, then it actually will help us to see your previous time, all those stuff. तो अगर नहीं भी है Strava, no worries, कोई issue नहीं है. हम आपको help कर देंगे. ये आप 4 घंटे में कितना कर सकते हैं, बट बेसिकली आज के दिन में 4 घंटे करना है, 6 घंटा करना है, वो आपको आज के आई थिंक क्लैरिटी आ गया होगा आपको, अगर या आप जिसके लिए भी पूछ रहे हैं तो इफ यू आर आस्किंग अबाउट दैट आनंद, सो आई एम नॉट श्योर. सो यू शुड अंडरस्टैंड, लाइक जैसे अभी जो एग्जांपल हमने दिया कि one person is doing around 12 kilometers as of now, he can actually do it 24 hours, yeah, with 8 weeks of planning. ऐसा नहीं कि 4 वीक पहले कुछ ट्रेनिंग शुरू किया suddenly. Right. So he has to go through this entire period of training. So right. Definitely will help in that. Rajesh का question है. Rajesh, hey Rajesh. So like we said, the training plans will be published, yes, or that will be there in the group. So yeah. So Rajesh, what we'll do is like 4, 6 and 12 hours के जो registrations होंगे उनके अलग group बनेंगे, WhatsApp group. So वो I think immediately we'll do it and then we'll share the plan and individually किसको क्या target है, we'll do that. Right. Jagannath Tiwari ji का question है, which is a very interesting question. Can we run anaerobic in ultra 4 hours? Yeah. It's a very tricky question. Anaerobic can be 200 beats per minute, मतलब heart rate. तो मतलब anaerobic, yes. See, it's race में तो I'll tell you it is not possible to run in aerobic. ज़्यादातर क्या होता है कि anaerobic में you have to go into anaerobic because that's why race. But definitely you can go, but again you need to see like your
हेल्थ का जैसे हार्ट यू मतलब इफ यू वांट टू डू आई मीन आपको नहीं जाना है, सो वी ऑलवेज से कि यू नीड टू डू ए मेडिकल टेस्ट ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। आज के दिन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिविजुअली यू टेक द पर्सनल इंटरेस्ट एंड गेट योर मेडिकल टेस्ट ऑल्सो डन इफ रिक्वायर्ड। So if you just have some kind of doubts कि नहीं मेरे को, and then but definitely anaerobic में जाना ही पड़ता है, and how much to go in anaerobic is also we'll have to I mean we can actually I mean we have to see to that. So I'll just quickly try to add a bit more details, Jagannath ji. First of all, anaerobic में जाना वो हो जाएगा because 4 hours when you are running, your body will heat up, etc. But how much to go, like Dada said, it's very important. And secondly, before and during the event also, we will have doctors, we will have checkups, health checkups happening, Yeah, that's etc. also very important. So they will also check your yeah. So I think you can go, but don't go too high. Don't plan to run at double your because and of course we have KD hospitals as the partner. So and then all we from have health checks doctors, and physio, physios everything also will that will be taken. Right. But coming back to that's a very interesting question. Thank you for asking that. Tarak has asked whether can we register in 6 hours after the TMM full marathon. I know Tarak. He was asking me this personally also, and TMM is happening in 2 weeks, right? So, TMM is January 20th. So he'll have one complete for so definitely you can do it, but you have to do very less mileage. You need to recover after your full marathon. You need to recover complete 1 week. Yeah. After that, you slowly again build up, and then 6 hours again. You cannot go all out. Like मैंने 6 hours में the target is 36 kilometers, and you want to do like 50 kilometers. It's you cannot do that. I mean, so you have to. You can target 36. You go for the slowest long, but you can go for that. I would add 2 more points to that. One another angle to it. Between TMM, Tarak, and whoever is planning to do this, between TMM and the ADR Ultra, you will have to choose one as your race. Yes. One of them can be a training event or a enjoyment event, Yes. while the other one will be a more serious focus run. So अगर आपका TMM is going to be a more anaerobic training for or fast paced time based run, then enjoy the ultra. Yeah. But again, Tarak, I know he's training, so I'm sure he's going to go into anaerobic, and Mumbai is a place where actually we'll go. You can't hold back because of the weather and event time. Yes. So, but yes, it's a very good point, or general point which Harish has shared. You need to target only one event or two events during the year. So that's how you should actually plan. Right. Where you give your full effort. I think Tarak is also. Thank you, Tarak. So Shub Traders again another question. How many shoes required for 12 hours? Very good question. Very good question based on the gears. Yeah. So see, this is a very two loops. So it's a 6 kilometer loop here. You should have at least not only shoes, fresh clothes also. You want to change at least basically 2 shoes you need to have. I mean that's how you Two shoes is two pairs of shoes. One you are wearing and the one that you can change after 4 or 5 hours is no. Somebody can go for 3 also if you want, but 2 is ideal because and it is good. I mean it is really good because again I'm saying आप लोग training कर रहे हो and this ultra is to getting used to other ultras which is across the country or across the world. So it will give you an idea कि हाँ मैं ये shoe के साथ इतना दौड़ा and then ये shoe change किया. So you'll be learning a lot out of it. So you're 6. So you need to change your shoes. You'll see the difference. You'll feel the difference. Your different muscles will be actually थोड़ा injury का chances भी कम हो जाए. Okay. Dada, Hemal has asked a very good question. I think we covered the walk run part. Can we walk run? Should we practice that in our run? So while we had talked about के walk run कर सकते हो, हमको practice में कैसे लाना? Very true. I mean walk is because एक बहुत ही challenging चीज हो जाता है. जो लोग दौड़ते हैं ना,
और ये दिस इज अ फैक्ट। आई मीन जो दौड़ना शुरू करते हैं देन फिर वॉक करके फिर वापस दौड़ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप Yes. ट्रेनिंग नहीं करते हो। Yes. तो आपको उसको ट्रेनिंग में करना है। सो व्हाट वी विल एक्चुअली, हम लोग जो प्लान भी शेयर करेंगे या आप लोग खुद जो अगर खुद के प्लान फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू गिव, यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड वॉक आल्सो, वॉक रन कंडीशंस, लाइक जैसे मैंने बोला 20 मिनट्स, 12 घंटे वाले स्पेशली उनको तो करना ही चाहिए। एंड 6 घंटा भी, आई मीन यू कैन डिसाइड, अगर आप करना चाहते हो, यू कैन हैव दैट एज अ स्ट्रेटेजी। इट इज रियली गुड। आप लोग एक को मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, इट इज लाइक ये एग्जांपल बहुत पहले का है। आज के दिन में तो वर्ल्ड का अल्ट्रा स्टैंडर्ड्स आर गोइंग लाइक हेल, लाइक 4 मिनट में लोग 100 किलोमीटर के पेस या 4 मिनट के नीचे में पेस करते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ जो 8 साल 10 साल पहले, 8 साल पहले देयर वाज अ रिकॉर्ड ऑफ 100 किलोमीटर्स। दैट पर्सन यूज्ड टू रन हिज रन, जो रन करते थे वो 4 मिनट के पेस पे रन करता था, and then he used to walk at a pace of around 6. तो वो 5 minutes 10 minutes वो walk करता था and then again he used to run. So it's a very good strategy because you can actually आज के दिन में walk को never neglect walk, because walk को मैं neglect करता था, don't neglect walk. आज के दिन में आप देखो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है या इंडिया का जो फास्टेस्ट वॉकर्स है, जो वॉकाथॉन करते हैं, जो ओलंपिक इवेंट्स है, they walk at a say 1 hour 20 minutes में लोग 20 kilometers करते हैं, you know, Faster than they are faster than most of us amateur runners. So it's So walk को भी आप include कर सकते हो ट्रेनिंग में करोगे। तो आप ट्रेनिंग में करोगे तो anything which is included in the training, then you will become better and better. You become faster in your walk. You then changeover also becomes easy during a race. But ट्रेनिंग में जब हम लेट्स से 10 किलोमीटर का रन है, तो 10 किलोमीटर में वॉक रन करना है या वॉक अलग सा रन अलग सा, कैसे आप कैसे So recommend? I would suggest both. I would suggest both. Okay. कि एक डेडिकेटेड मतलब वॉक अलग से होना चाहिए। से लाइक दिस इवेंट इज हैपनिंग इन द नाइट, राइट? सो हम लोगों ने क्या किया, अभी जैसे अल्ट्रा हम कर रहे थे तो हम लोग सुबह दौड़ते थे एंड दोपहर को हम वॉक करते थे। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज लाइक मॉर्निंग यू कैन रन एंड देन इवनिंग यू कैन गो फॉर अ वॉक, मतलब वॉक इन द पार्क और सम प्लेसेस सेफ है जहाँ पे गाड़ी उड़ी का टेंशन नहीं है, एंड देन डू सम ब्रिस्क वॉक, and it should be brisk walk, it should not be leisure walk. Okay. तो आप brisk walk करोगे then your muscles will open up. Okay. That's how. Yeah, we are almost over 12:30 right now, but we'll quickly go through the rest of the questions and we'll try to answer as crisp as possible. Just a general question, Dada, from Pragnesh Patel. Is fastener gel or any other kind of gel needed to take during the ultra? As ADR is very good, so we can consume chicky, dates, fruits as is a nature way to go it. As ADR ultra is a different game than racing up. Very valid question, Pragnesh, and I think Pragnesh is a very good runner. He's from Baroda and he's doing a lot to improve the running community in Baroda. I really love him for that. I mean, he, and not only him, few others are also doing, but he's one of the flag bearers. So he's very good. I mean that way. Right. So Pragnesh is a very good question because I know your level of as an athlete. So I think you should look at this event to now graduate into going into different kind of events like this. जो अभी SRTL मैंने किया था, I used gels. I used around 14-15 gels. Yeah. For 100 kilometers, and I did not take anything else other than gels. And sometimes those oranges मैंने लिए थे, and it was a very tough course. But it is possible. So you need to try out Pragnesh combination कि हाँ कौन सा chicky and all तो मिलेगा, and then chicky and all takes little more time to go into your system. Exactly. So because when you're running really faster, so you need to have those gels and all which actually works really fast. So just on that note, Pragnesh, fasten up is also the hydration partner, like I said. So you should at least the event will, but they will not be, I think gels will not be there. Gels will not be there. You can definitely procure it, but at the same time it's a very valid question. Yes, you should have a combination. So apart from chickies and dates, I think there is at the timely intervals there is always going to be solid food like upmas or idlis or something like that also available. I want to add one more point here, a very good point. Pragnesh के बाद से मेरे को एक और चीज लग रहा है, because ये 6 किलोमीटर का loop है, so you can actually keep your own hydration also. So like if you are not used to fasten up, आपको अगर fasten up is the sponsor, some people may not be using it or not used it. हम लोग बोलते हैं कि race day में आप नया चीज मत करो, so you try fasten up
and then you are feeling uncomfortable, kuch hai, then you can actually have your own energy True. drink, and you can keep it in that aid station. उनको बता के रखना कि मेरा ये bottle है, आप थोड़ा ध्यान से रखना, kind of, you know. True. And you can also have your bag, उसमें भी आप रख सकते हो, because Drop bags भी drop bags है, है, which you can basically 6 and 12 hours के लिए ये काम करेगा. which you can access. I mean, drawbacks आप हर 6 किलोमीटर पे कर सकते हैं. Apurva has messaged. He's an ultra runner. He's recently finished the border run. Apurva ji, 100 miles. I think you are a graduated runner. You have faced serious issue of blister in the later part of the race. Can you throw some light on how to deal with it? Yeah. So blisters. It's a very valid question, but blister is something which happens. मैंने देखा ज़्यादातर अगर two couple of reasons. One can be your shoe is a little more so one size. जैसे आप लोग this is also important, like जैसे पहली बार 4 hours and all, it's a very थोड़ा ऊपर का question है, but आपके लिए भी apply करता है. आप नया shoes लोगे या जो भी है, it has to be a size bigger. आप उस दिन यूज करोगे तो that way actually you have more space for your foot to move, and that can be one reason कि अगर shoes tight है, one reason, or you must be sweating a lot. तो आपका sweating बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने देखा जिसके sweating ज्यादा होता है, मैंने देखा कि उनका blisters होते हैं. But I normally इसमें इस वाले इवेंट में हम सजेस्ट करते हैं कि that's why we say 2 shoes रखे. I don't know आप 100 miles में shoes change किए थे कि नहीं किए थे. So that can be a very strategical thing if आपको blisters होते हैं regular है. So you can have like 2-3 shoes, different shoes है, socks है. Socks is also very important. तो अच्छे quality socks use करना चाहिए. जैसे CEP I don't know nowadays, but they have very good quality socks. So you need to go for those kind of dry fit socks and all the stuff. And then हम लोग एक और चीज करते हैं, like gels है, like petroleum gel. So you can apply that Vaseline and then put the socks. So that can be avoided. These are tips that can help. Yeah. But Again, it's personal. Still some of them might come. Yeah. The another thing that I personally have started trying is I started putting in toe socks. Yeah. So I started putting in toe socks instead of the normal socks. I started going for 5-finger socks, which also is helping me. Yeah, that's a good one. Dada, can you share some videos? I think those will come in. These are again. The question is from Mansi. Mansi will be putting those videos into the in the groups that we are creating for trainings, which will also be helping from a recovery point of view. So I think it's a very but the question which you have asked is like stretching. See, it's not only stretching, injury के लिए ना. One more thing which we have not touched upon is like you need to do a little bit of strength training also, because stretching is there's other strength training is more important. Like if you can add that strength training, basic strength training घर पे भी कर सकते हैं. मैं आज के दिन में घर पे ही करता था, but now I have realized with my age I need to go into a gym to maintain that. So, but you can actually maintain. So basically, strength training is more important. Stretching is also important. Not that we'll discuss separately. So yeah. We'll share. There will be physiotherapists also. Yes, on the premises, and you can access them whenever you would want to. You feel tired or you want to get stretching done. So that's also possible. Anand's next question is like we'll ask our vice president or president to answer. No, it's a very valid question. But Amish has posted a question like he's did 4 hours twice routine 10K run. He runs routinely 10K and walk under 9 minutes. So did a few 12-kilometer walk. Can he plan a 12 hours ultra? Yeah. The question is good. I'll just try my 12 hours walk. I think sustaining for 12 hours. आपने जो लिखा है उसमें you have written shorter durations. I think sustaining for 12 hours. 12 hours walk also. Did few 12 hours walk, which is a. So I think you can actually attempt. Yes, you can attempt, because there are a lot of ultra runners across the country who does a lot of ultras. Yeah. And they just walk on the race. So if you are getting that kind of a 9.5 pace, which is excellent, I mean, you can actually go for it. Yeah.
You should Yeah. just keep a tab on the number of kilometers that have to be Yeah, completed as part of 12 hours. उसके हिसाब से आप run walk वाला combination try कर सकते. Yes. Anand, your feedback is taken. This time around the venue is also changed. That you will get a update. The venue is towards the Belvedere Club, which is a club facility and not a shopping complex. So that will also play a part. I think the toilets and the washrooms will be cleaner, and the porta toilet washrooms are also available. So those both should address this point also. Ravi has and looking at the time constraint, we might not be able to take all the Insta messages if there are any, but we'll try to address them later. Ravi has asked if Dada, if I have almost recovered from an IT band injury and running full in TMM. That's brave, Ravi. All the best for that. Would like to run an ADR Night Ultra for the first time. What distance should I opt for? My full marathon PR is 5 hours 40. I think as Harish has pointed out, आपको ये एक रेस है जो जिसमें आपको फुल आउट एफर्ट देंगे. So this is, if you're going for a full out effort for this race, then you can just enjoy. Do this 4 hours. It's a recovery. And recovery के लिए करो, or 6 hours also you can go for. I would not suggest 12 hours, but definitely you can go for 4 hours or 6 hours. 6 hours also again walk run का combination होना चाहिए. You should not go all out. Just enjoy and have the fun of doing an ultra. That's how it is. Right. And another question from Lofer, I think, is Dada, I'm targeting HM with PB in Gift City. I have registered for 12 hours also. So how should I go further with pace? Should I focus on pace or for ADR Ultra? This is a good question. We can actually, see, if you are doing only half marathon, you are going for a personal best, that's fine. But more important is how much volume you're doing is more important. That will actually tell us, like, if you want to do, you should do 6 hours or 12 hours. I think, but Dada, I think, and just adding to that, Dada, you can confirm if it's right. But too short of an information level to actually determine to answer the that's question why specifically. You can get back to us personally. We can actually help you on that. Maybe in the group. Because one more thing, I don't know when is this last. Today. Today is the last day. Today is for the early bird. Early bird. So maybe people want to register today. That's why. Dr. Bhaskar has asked a very valid or hinted a very valid point here. What is the role of electrolyte supplements like ORS in ultra run, and how we come to know it's time to consume it? So it's a very this question is coming from a doctor. Means the doctor knows about the subject, but he's trying to tell you that you cover this subject also. It's a very important subject. So ORS is, I have found out, like, if I give my example, अभी जो मैंने SRTL जो ultra कर रहा था, I suddenly felt different kind of cramps in my calf muscles, both my calf muscles. And this is out of experience. So I immediately realized, like, the normal energy drink may not work for me now. So I need to go. So I went for ORS, and that electrolyte, and that actually immediately changed the entire thing. So because ORS, as Dr. Bhaskar used to always say, it's actually basically it's prepared that way. It has all the elements, minerals and all those stuff for kind of a patient, the patient को recover करने के लिए. So we are also, हम लोग भी, we are going into that when we are running so bad, हम लोग भी patient जैसा हो जाता है, हमारी immunity कम हो जाता है. That's when this ORS actually helps. And I've seen this, it helps. अगर ठीक है छोटे रन से कम है, then definitely. So if you are going for 12 hours and you want to go all out within, or you are comfortable with ORS, you can keep ORS there. And then you can actually use ORS. Right. Rajesh has also asked, Dada, can we run with combination of both shoe and barefoot for durations? If yes, then what shall be the intervals? Yeah. Yes, there is a patch of about 1.8K, which is not very good
stage for Very good. barefoot. So I think Rajesh has asked a very important question, and since he's from Shantigram, he is aware of the route. I actually forgot to cover that, because one of the last time also we had informed runners कि ये हो सकता है, it may not be barefoot friendly, but some runners are very good in any kind of surface. Like Rajesh is a very good barefoot runner, so he can actually manage, but not all will manage. But definitely a combination, as you said, combination is very important, and combination will be very good. But जो अगर कोई barefoot runner है, they can actually have a combination of. So in other words, I think. But again, you need to be a very good barefoot runner like Rajesh. Otherwise, it will not be possible. Yeah. And then if you want to try, मतलब fast दौड़ना है तो not possible. It may harm you. In other words, like Rajesh, you clarified or shared, it's not a barefoot friendly route, Yes. the entire route, right? Yes. So yes, 1.6 if you're so we should not. if you're experienced, you can try, but do keep a shoes which you can change into. Yes. You know, but at your own peril. You know, should traders again, what food should we take during ultra? What would be your recommendation? Because So again, this will be covering it that session. So like food and all will actually, it's very specific. We'll see all these things will cover. अभी तो क्या है, आप लोग register अगर नहीं किया तो करो, and then bring with you 10 more runners with you to. It's basically, you know, this session was more from an awareness point of view, and also We'll be there with you. सबको वो awareness रहे, और कोई ऐसा दिमाग में वो ले रहा है कि मतलब वो दिमाग में चल रहा हो कि क्या मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, क्या मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ये वो वैसा था. बट to answer that question, while हम लोग वो hydration or nutritionist will answer it much better, and the simple rule is anything that is easily digestible or fast digestible and not filling your stomach or bloating your stomach. And then what we'll do also is like you might have to try this out during a run, because बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे अभी खाना खाया and then they are not able to, they suffocate, they are not able to run. So during the run, this is also through training. So when you actually train, you will have to work on that also. कि आपको थोड़ा सा solid food लेके दौड़ना है. These are again basically 12 hours वाले को ज़्यादा जरूरत पड़ेगा. Right. Anupam has sent a direct message. It's a direct question. I think Anupam will have to take it in a more focused or one-on-one kind of an approach when we create the group. If you already have a connect with Dada, he can reach out. I know. So you can possibly address it separately. He's a very good, excellent. He's asking specifically for 100 miles in Bangalore. So all the best for that, Anupam. Yeah, I'll touch base on that. Mansi, you asked whether that you are a new runner and ultra is my first time. So anything specific you advise to have before the run in the morning? Yeah. Or during the day? This is again, there are different schools, school of thoughts, but I always feel, if you ask me, most of us runners, we do not consume anything during the, because most of the runs are aerobic, and what we want is our utilization of the fat to convert into energy. So it's a subject which we can discuss separately. I'm always available. You can contact me. So on my phone. So definitely, yeah. But so again, I think this can be covered, or this will be covered during the nutritionist session as well, and when that information comes. But Mansi, in general, the principle is don't try anything new. Keep it light, and don't overdo anything. As simple as that. That will be the guideline. फिर उसके बाद आप I think nutritionist को भी आप directly पूछ सकते. So thank you for all the great questions, Dada. Always a pleasure talking to you, and this is really good. Thank you for your time, and I really hope that we all end up registering and seeing you on the session on the ADR route and having fun while we are doing that. Thank you and all the best. you.